हाय एवरीवन, सो इन टुडेज़ वीडियो हम लोग बात करेंगे कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स कैसे हटाएं। आई नो ये बहुत स्टबर्न होते हैं और जाते ही नहीं हैं। मैं बस एक 2 स्टेप रूटीन आपको बताऊंगी जो कि मैं हर हफ्ते करती हूँ to manage the blackheads and whiteheads that I have on my face, especially on my chin, my nose and a little bit of दैट ऑन माई फोरहेड। तो ये बहुत ही सिंपल रूटीन है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ। जस्ट मेन तो 2 स्टेप्स ही हैं, बट द फर्स्ट स्टेप हैज़ टू बी टू वॉश योर फेस बिकॉज यू डोंट वांट टू स्टार्ट एनीथिंग ऑन अ डर्टी फेस। और प्रेफरेबली ये रात को करो ताकि आपकी स्किन को हील होने में थोड़ा टाइम लगे। जैसे कि मैंने अभी जस्ट फेस वॉश किया है और आई हैव स्क्रब्ड माई फेस विद माई फेस टॉवल वेरी जेंटली, और इस वजह से वो थोड़ी रेड हो रखी है। आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड माई फेस, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा फेस वॉश यूज़ करा है। आई हैव यूज दिस फेस वॉश। यू कैन यूज़ एनी फेस वॉश यू वॉन्ट, बट अगर आप सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड is known to go inside your skin, like deep into your skin, and remove the pimples, blackheads, spots, and it is really good for oily skin. Especially, I don't have oily skin, but it does wonders for my skin as well. So yeah, this is a very good face wash. There are multiple face wash you can find based on salicylic acid in the market right now, so you can check it out. By the way, this is from Dot & Key. It's the Cica Calming Blemish Free Face Wash. It has salicylic acid, green tea, Cica is Central Asiatica, which helps to soothe your skin down, and this has some amazing ingredients. So yeah, this is the face wash that I used. I will show you how I like to use it. So first, you have to wet your face first, and then I'll take just a little bit of face wash, like that much only. You don't need a lot of product. Massage it onto your palms first and start scrubbing with this face wash only. Make sure you're applying a little bit extra pressure on your nose and your chin, and this face wash does not have any particles of scrubs or any beads, but this does have some active ingredients. So this will make sure कि आपकी skin अच्छे से साफ हो रही है. Take your time while you're washing your face. At least wash your face for a minute or so that you will remove all the impurities nicely. Don't बहुत ज़्यादा देर के लिए भी मत धोना. Just a minute is fine, and that is enough. Okay, so I will be back after like removing this face wash from my face. Now you have to take your face towel. Take your finger inside that towel and start scrubbing your nose like this. And your chin as well. Now I will do my forehead as well because I have a little bit of bumps over there as well. Now I will just remove the excess water, and you can instantly see कि मेरी skin कितनी clean लग रही है. Now the next step is to wet your face again, like especially your nose area, because हम लोग nose strip लगाएंगे. Now the nose strip that I am using is from Sanfe. I really like their nose strips and they do work very nicely. बहुत ही अच्छे से सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल देती है. तो ये 2 अलग अलग टाइप की नोज स्ट्रिप्स है. इसमें 3 आती है, तो अगर आपको सिर्फ ट्राई करने के लिए मंगाना है तो आप ये 3 वाला पहले मंगा सकते हैं. और दिस कम्स विद 6 पैक्स, सो यू कैन चूज़ ईदर और वट एवर यू लाइक और वट एवर यू नीड. तो ये पोर्स को भी क्लीन करती है और आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी हटा देती है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम इसको लगा लेते हैं. तो मैं ये वाली लगा रही हूँ जो कि 3 वाली है, because I have only left with 1 of these. I've already used the other 2. So let's do this. So by the way, this comes in this kind of packaging. This just says deep cleansing nose strip. That's it.
ओके तो मैं अपने नोज़ को वापस एक बार वेट करके आती हूँ हल्का सा, नॉट दैट मच बट इट शुड बी वेट। अब हम बस इस नोज स्ट्रिप को खोलेंगे। एंड दिस ट्रबल इज रियल। ओके तो ये कुछ इस तरह से आती है। इसका जो अंदर वाला पार्ट है वो आपको इस तरह से लगा लेना है, और बिकॉज आपकी नोज वेट है इट विल स्टिक वेरी नाइसली। और जो हाथ में एक्सेस वाटर है उससे इसको अच्छे से प्रेस कर लो। Now you can do this on your chin as well, on your forehead as well. The same thing, the same nose strip you can use on every part of your face if you want to. I am not going to do anything. Okay, I will let this sit on my face for 15 minutes. After 15 minutes, we will peel it off and you will see the results. Okay, so I'm back. It's been 15 minutes or so, but it is completely dry and it is hardened, as you can see. Now we shall remove this. I know it is going to be painful because you will see me struggling. I know, but beauty is pain. We gotta do what we gotta do. Ow. Oh my god. Do you want to see the close-up? I don't know if you can see. Let me just... I will show you. Wait. ओके तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, और विद द फर्स्ट स्टेप यू कैन सी द डिफरेंस. आई नो थोड़ा रेड हो रहा है बट दिस इज़ वेरी नॉर्मल. इट विल काम डाउन इन जस्ट फ्यू मिनट्स. तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू मास्क आवर फेस विद द फेस मास्क. नाउ मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सैलिसिलिक एसिड इज़ वेरी गुड फॉर यू इफ़ यू वांट टू रिमूव blackheads and whiteheads and even spots, acne, everything. So I have to use a salicylic acid based mask, and I have been talking about this mask for quite some time now, like a month or two, and I really like it. So before I use that, I have to like clean my face with just water. So I will be back after cleaning my face with just water, and then we will apply the mask and I will tell you what mask I am going to use. हमने हमारा face वापस धो लिया है with just water. Now we will apply the mask to work on the other parts of our face as well, where we don't have that much blackheads and whiteheads, but we do have a little bit of bumps. So to calm them down, to reduce the bumpiness, we have to use a very good salicylic acid and clay based mask. So the mask I am talking about is this, the Derma 2% salicylic acid clay mask. It has salicylic acid, kaolin clay, activated charcoal, and you can use it twice a week, but I like to use it once a week when I am doing this routine. So without wasting any more time, just apply it on our face. For that, I'm going to tie my hair first. So we are going to apply this directly. As you can see, I have used a lot. मतलब आधे से ज़्यादा यूज़ कर लिया. दिस इज़ दैट गुड. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू फोकस इट ऑन माई नोज़ दैट मच बिकॉज वो भी बहुत सेंसिटिव है क्योंकि हमने पील किया है उधर से. आई एम गोइंग टू अप्लाई रियली थिक लेयर ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ माई फेस. आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई नोज़ बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है. अगर आप नोज स्ट्रिप लगा रहे हो और आपको नोज़ पे ये मास्क लगाना है तो जस्ट स्किप द नोज स्ट्रिप.
और अगर आपको ये फेस मास्क लगाना है तो इसको एक दिन पहले लगा लो और अगले दिन यू कैन यूज़ द नोज स्ट्रिप। तो मैंने बहुत लाइट लेयर लगाई है अपने नोज़ पे ताकि ये ज़्यादा इरिटेट ना हो। यू अगेन हैव टू वेट फॉर लाइक 15 मिनट। आई विल सी यू आफ्टर 10 मिनट्स। I mean, can you see? So bus, I'm going to apply my moisturizer now. You can use any moisturizer. You can even use your aloe vera if you want. But I like to use this Dot & Key moisturizer. This is from the same range as the face wash, the Cica calming range. And I'm just going to moisturize my face with this because हमने clay mask use किया है तो फेस थोड़ा ड्राई हो जाता है। आई मीन, कैन यू सी द डिफरेंस इन माई स्किन? इफ़ यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल लव टू हियर योर थॉट्स। मेन सिर्फ 2 स्टेप थे जो मैंने किए हैं, विच वॉज नो स्ट्रिप एंड द फेस मास्क। टुगेदर दे बोथ वर्क सो गुड। You can do this at home and you don't have to go to parlors and salons to remove this. This works totally fine and I really like to do this every week, and I can do this without spending a lot of money, which is obviously my main concern. I don't want to spend that much money on a regular basis, but I want to maintain the health of my skin, which is very important for me. If you are someone जो कि बहुत स्किन केयर करना पसंद है आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको ऐसी ही DIY स्किन केयर पसंद है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। I have planned a lot of content about how you can manage and have healthy skin at home with just few ingredients and few products, and that's it. Now if you want to know many things about these, you can subscribe to my channel or you can hit the notification bell as well, ताकि whenever I post any video that will be notified to you. And with that, that's it. I love you all. I will see you next time. Till then, take care and bye.